In light-dependent reactions of photosynthesis, the number of water molecules that produces 2 oxygen molecules during photolysis is, in the balanced equation, 2 molecules of water produce 1 molecule of oxygen. हमसे पूछा गया है 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन का, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे 2 oxygen molecules. That's why option C 4 is the correct answer. 4 molecules of water produce 2 oxygen molecules. Next question. The given flow chart shows different processes involved in the energy transformation in plants. Formation of glucose, process 1. Oxidation of food, process 2. Storage of energy. Which of the following is correct about the flow of energy at process 1 and 2? Process 1 represent कर रहा है photosynthesis को. As you know, photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as a byproduct. Means input of light energy is shortlisted. Process 1 के लिए. Process 2 oxidation of food is respiration. As you know, cellular respiration is the process by which foods are oxidized in the presence of oxygen to produce or release large amount of energy to drive the bulk production of ATP. तो release of heat energy shortlist हो गया. हमारे दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शो कर रहा है. That's why A is the correct answer. Next question. Which of the following conditions causes the accumulation of ATP and NADPH in the stroma of an illuminated chloroplast? Absence of carbon dioxide would block the dark reaction Calvin cycle during which ATP and NADPH are used to reduce 3 carbon compounds. If there is no carbon dioxide means no dark reaction or Calvin cycle, because of which ATP and NADPH accumulate in stoma of chloroplast. That's why option D, absence of carbon dioxide, is the correct answer. Next question. In light-dependent reactions of photosynthesis, the source of electrons for NADPH is, given options में से जो correct answer है वो है option C, that is water. As you can see in picture also. As you know, when chlorophyll molecules absorb light, their energy level increases and their electrons are emitted. Electrons are passed to electron transport chain to produce ATP. Light also breaks water molecule photolysis and oxygen is released. The hydrogen atoms of water give electrons to chlorophyll and become ions. The electrons of chlorophyll after the production of ATP and the hydrogen ions of water are used for the reduction of NADP into NADPH. That's why option C, water, is the correct answer. Next question. The given graph shows the blood lactic acid concentration of an athlete before, during and after a race. Blood lactic acid concentration, millimoles per liter, time in seconds. The sections of graph which show anaerobic respiration during the race are, as you know, during anaerobic respiration, each pyruvic acid molecule is converted into lactic acid. जब जब लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी तब तक एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हुआ होगा. मीन्स पी से क्यू और आर से एस, जो ऑप्शन सी शो कर है. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The given graph illustrates the effect of carbon dioxide gas CO2 concentration on the rate of photosynthesis, carbon dioxide gas concentration. The regions at which the carbon dioxide concentration does not act as a limiting factor is slash R. As you know, as the carbon dioxide concentration rises, the rate of photosynthesis goes on increasing until limited by other factors. यहाँ पे भी हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी। यहाँ पर भी जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी, मगर यहाँ पे हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चाहे हम कितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा लें। मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन सी 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। Next question. The given bar graph shows the average number of chloroplasts in three different types of leaf cells 1, 2 and 3. Average number of chloroplasts in each cell, leaf cells. Based on the average number of chloroplasts, the option that identifies leaf cells 1, 2 and 3 is palisade mesophyll cells contain the largest number of chloroplasts per cell. Means 2 is palisade mesophyll cell, उससे कम होते हैं स्पंजी मेसोफिल सेल में और सबसे कम गार्ड सेल में, जो ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डैमेज्ड इन अ न्यूली डेवलप्ड सेल, then the structures which will be immediately affected due to this damage is slash R. As you know, chloroplast is bounded by a double membrane. The outer membrane is smooth while the inner membrane gives rise to sacs called thylakoids. The stack of thylakoids is called grana. That's why correct answer is option C, that is thylakoid. If inner membrane is damaged, then immediately affected is thylakoid, means immediately affected structure is thylakoid, means option C, thylakoid is the correct answer. Next question. Salma wants to conduct an experiment to investigate that chlorophyll is necessary for photosynthesis. To carry out the experiment, she takes 4 different leaves labeled as A, B, C and D. Which of the following leaves should Salma select to carry out the experiment? As you know, a variegated leaf is used to investigate the factor necessary for photosynthesis because variegated leaves have green parts where the cells contain chlorophyll and white part where there is no chlorophyll. Only the parts that were green become blue-black with iodine solution, showing the importance of chlorophyll in photosynthesis. तो हमें variegated leaf किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन ए में. That's why A is the correct answer. Next question. Consider the given experimental setup. Oxygen gas bubbles will not be produced in the test tube if the, as you know, we use this experimental setup for the demonstration of photosynthesis. As you know, photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as a byproduct. हमसे पूछा गया है कब ऑक्सीजन बबल्स नहीं प्रोड्यूस्ड होंगे। अगर हम टेस्ट ट्यूब को कवर कर देते हैं ब्लैक पेपर से तो भी फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि बीकर तो कवर नहीं है ब्लैक पेपर से, प्लांट को सनलाइट तो मिल रही है, मीन्स फोटोसिंथेसिस होगा। तो ऑप्शन बी में भी ऑक्सीजन बबल्स प्रोड्यूस्ड होंगे। अगर हम हाइड्रिला प्लांट को रिप्लेस कर देते किसी और एक्वेटिक प्लांट से तो भी बबल्स प्रोड्यूस होंगे।
क्योंकि हर प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं इन डी लाइट। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को रिप्लेस कर देते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट से तो भी फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट दोनों प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बीकर इज फिल्ड विथ डिस्टिल वाटर। अगर बीकर में सिर्फ डिस्टिल वाटर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ऑक्सीजन के बबल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। दैट्स वाई ऑप्शन ए, बीकर इज फिल्ड विद डिस्टिल वाटर इज द करेक्ट आंसर। अगर बीकर को सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर से फिल कर देंगे तो ऑक्सीजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड में गैस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Misbah has set the apparatus in the following way to investigate the release of heat during aerobic respiration in germinating seeds. Which of the following reactions will take place in vacuum flask 1? वैक्यूम फ्लास्क 1 में जर्मिनेटिंग सीड्स है और वैक्यूम फ्लास्क 2 में बॉइल्ड सीड है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर यहाँ तक नज़र आ रहा है और जर्मिनेटिंग सीड्स में थोड़ा सा राइज हुआ नज़र आ रहा है। मीन्स हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है जर्मिनेटिंग सीड्स वाली फ्लास्क में। और हमें एनर्जी कहाँ नज़र आ रही है? ऑप्शन डी में। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। हमें वैक्यूम फ्लास्क 1 में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। एज यू नो, cellular respiration is the process by which substance, food are oxidized in the presence of oxygen to produce or release large amount of energy to drive the bulk production of ATP। और हमें एनर्जी ऑप्शन डी में नज़र आ रही है और रिस्पायरेशन का प्रोसेस, रिस्पायरेशन की इक्वेशन भी ऑप्शन डी में नज़र आ रही है। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। In the chloroplast of a plant cell, if thylakoid membrane is damaged, then this will directly affect the, as you know, light reactions take place on the thylakoid membranes of chloroplast. That's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is light dependent reactions. Krebs cycle occur in mitochondria. Calvin cycle, that is dark reactions, take place in the stroma of the chloroplast. Process of glycolysis occur in cytoplasm. That's why option D, light dependent reactions, is the correct answer. हमने कैसे पहचाना किस कीवर्ड से? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज डैमेज्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ स्टर्नस एक्सरसाइज ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हेल्प्स इन द गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एज यू नो, ATP is generated by energy releasing processes and is broken down by energy consuming processes. In this way, ATP transfers energy between metabolic reactions. Next question, dark reactions of photosynthesis involve the given options में से जो correct answer है वो है option A, that is utilization of ATP। बाकी सारे ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन सी लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ NADPH, ये तीनों ऑप्शंस रेलेवेंट है लाइट रिएक्शन से। हमसे डार्क रिएक्शन से रेलेवेंट पूछा था, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एज यू नो, लाइट breaks water molecule, that is photolysis, and oxygen is released during light reactions. That's why option B, water molecules, is the correct answer. Next question, in the absence of Calvin cycle of photosynthesis,
द प्लांट विल बी अनएबल टू, गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज synthesize glucose, means option A is the correct answer. As you know, photosynthesis occurs in two phases. During first phase, light energy is captured and is used to make high energy molecules, that is ATP and NADPH. These reactions, which are known as light reactions, take place on the thylakoid membranes of chloroplasts. During second phase, carbon dioxide is reduced to make glucose. In this phase, the energy from high energy molecules, that is ATP and NADPH, is utilized. Since these reactions do not use light directly, they are known as dark reactions or Calvin cycles. The dark reactions takes place in the stroma of the chloroplast. मीन्स ऑप्शन बी सी डी रेलेवेंट है लाइट रिएक्शन से और ऑप्शन ए रेलेवेंट था केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन से. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए सिंथेसाइज ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन anaerobic respiration, the total net yield of ATP molecules after the oxidation of a glucose molecule is, given ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 2. Means option A, 2 is the correct answer. Next question. The given graph shows the effects of different levels of factors on the rate of photosynthesis. Based on the given graph, it can be inferred that the rate of photosynthesis, हमें क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी गिवन है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमें नजर आ रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेम है, दैट इज 0.03%, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है 20 से 30 डिग्री, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज कर रहा है. अगर टेम्परेचर सेम है, दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है 0.03% से 0.13%, तो भी हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है. इसलिए जो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज इंक्रीजेज significantly with the increase in carbon dioxide concentration and temperature. Means option C is the correct answer. Next question. The given diagram shows some events of anaerobic respiration. Which process and byproduct formation occurs at X and Y respectively? As you know, in glycolysis, a molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid. Means process X is glycolysis. In alcoholic fermentation, pyruvic acid is further broken down into alcohol and carbon dioxide. Means byproduct Y is carbon dioxide. हमारे दोनों करेक्ट आंसर दैट इज प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस एंड बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ए में थे. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Next question. The given image shows an experimental setup in which a de-starched plant is kept in the sunlight for a day, and an iodine test was conducted on the experimental leaf. The option that correctly identifies the part of experimental leaf which shows the presence of starch and the reason of this result is, given options में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आइडेंटिफिकेशन 1, और रीजन क्या है, इट ऑब्टेन द रिक्वायर्ड सनलाइट टू सिंथेसाइज स्टार्च. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमने डी स्टार्च प्लांट को सनलाइट में रखा, उसके कुछ पार्ट को ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर किया. तो जो पार्ट ब्लैक स्ट्रिप से कवर है उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो मीन्स स्टार्च नहीं बनेगा वहाँ पे, तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा. मीन्स इस पोर्शन में हमें आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा. जबकि ये पोर्शंस क्या है, ओपन है, तो यहाँ पे सनलाइट होगी तो स्टार्च भी फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आयोडीन टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. इसलिए हमने 1 को आइडेंटिफाई किया, 1 शॉर्टलिस्ट किया, और रीज़न क्या था, उसको सनलाइट मिल गई है जो उसे स्टार्च बनाने के लिए चाहिए. आपको पता है फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The given experimental setup shows that heat is produced during respiration in germinating peas. The given result is obtained after keeping this setup for 3-4 days, which is inaccurate. Temperature: vacuum flask containing boiled seed 25 degrees centigrade, vacuum flask containing germinating seeds 24 degrees centigrade. Which of the following would be the possible reason for increased temperature in the vacuum flask containing boiled seeds? जो फ्लास्क बॉइल्ड सीड कंटेन करिए उसका टेम्परेचर राइज नहीं करना चाहिए, बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज है, तो हमें उसका रीज़न पहचानना है. तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज सम बैक्टीरिया माइट बी प्रेजेंट इन द फ्लास्क. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज करें. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Next question. A variegated leaf is used to investigate the factor necessary for photosynthesis because a variegated leaf, given options में से जो correct answer है वो है option D, that is contains some green and white patches. Means option D is the correct answer. A variegated leaf is used to investigate the factor necessary for photosynthesis because a variegated leaf contains some green and white patches.